अंकल रुक जाओ. वेट वेट मैडम वेट मैडम वेट मैडम थांबा इथं लेफ्ट पे तुला लेफ्ट पे आहे लोक सेंटर. काय झालं थँक यू वाव ब्यूटीफुल वेट वेट लेफ्ट पे वेट गाइस वाव थैंक यू कोई कमाल लेफ्ट सामने सामने मैडम राइट साइड सामने मैडम ए रानी बाग सामने देखो मैडम वेट लुक किया मैं किधर है भाई. लुक किया राइट साइड वाओ ये सीधे सीधे अरे ये लाइट नहीं पे ये लाइट लगा In the event of an unsafe occurrence, the emergency siren will sound. It will temporarily suspend the proceedings, and you will be guided by our staff to evacuate the hall through the doors marked as exit. Enjoy the show.
यहाँ पे राइट में कविता लुक सेंटर कैमरा वेट वन मोर लुक सेंटर कविता जी मैम राइट अरे बूम गिरेगा भाई अरे कौन है ये? अरे कोई भी तुम नहीं हिलाएगा, पहले बोल देगी। वो लाइट बरोबर लुक सेंटर यहाँ पे स्प्लिट पीला की पीला अरे काय भूमि लोग सेंटर राइट सेंटर नहीं मिला अरे यहाँ पे भाई रुक जा नाइस कलेक्शन सर नेक्स्ट मार्क्स पीटीआई क्या करती हो यार तुम ऊपर भी रखोगे समझ नहीं पा रहा सर बाइट सर बाइट Hello. Jaspreet is also coming and then we start. Okay. अभी 2 मिनट में शुरू करें. जसप्रीत आएंगे फिर शुरू करेंगे. भूमि जी जलते हैं मजनू You're too funny. रोल मैम अरे ऐसे कैसे? ज्वाइन कर लेंगे मैम Who are we waiting? Who are we waiting? Oh, yes. I have a very exciting show for Royal. As always, Amit, what a spectacular show. What a spectacular show. And we have just mentioned the heads of Tableau, just been a little bit about today, nothing, the association. Amit, then a little bit about your collection. I'd love to know what you're wearing, what you like about it. I think we'll start with the designer and then we'll come to, because it's his stage. So, no, please. No. Thank you. Overwhelmed right now, but I think, Noor, like you rightly said, a great show is a combination of a lot of greats that come together to make something exciting. I think right from the platform of FDCI and Lakme coming together, joining forces with a brand like Nothing, which is of course a pioneer in technology, and an iconic person like Bhumi, epitomizing the the age-old textile Banarsi, but yet giving it her own life and spin to it. I think today really closes this show on a very wonderful note. Thank you, Jaspreet. I always tell you I'm indebted to your support. I can do what I do with your love, and Bhumi, for reviving and loving a textile that's always been loved, but to give it a new lease of life, just like every single actor, every single character you portrayed and breathed another life into it, today shall always be an indelible memory. Oh, so, actually one of the phones actually,
fell close to, we have some international guests who came in today. Okay, one of the phones fell close to them. Okay, and they spent half the time looking at the phone and wondering what beautiful design this is, as they spent, looking at your, show as well. I think, Amit, you always push the boundaries of what we call fashion. Okay, and certainly, this collaboration is something that we thought was an organic fit. In fact, just for your reference, with the Nothing team, we didn't have a conversation to say it could be X designer versus Y designer versus Z designer. It was you, because I think your design and what Nothing stands for, and the Nothing tree is, with this beautiful glyph design, is something that, where the design aesthetics marry as well. The work that you've done in technology, with your clothing, sometimes it's just impossible to understand how you put all of this together. And that's something that, whenever there are brands that look for people who are going forward in fashion and technology, I think that becomes a great, let's say, marriage. And we are glad we have enabled that. We'll speak a little more about the collaboration, but I think first we'll just hear from Bhumi, who's always fantastic. I think one of the things that we love about Bhumi is that generally when we have a conversation around sustainability, okay, it's not a force fit. She genuinely believes in it. She's supported us with the Circular Design Challenge in the past, and we always appreciate having her here. So maybe you can just put in a few words about Amit, what you felt. Okay, and yep. Good evening, everyone. I just want to start by saying that I'm a fan of your work. I remember the first time I wore something created by you. It was this beautiful metallic gown, and I was like, this is so incredible. I was like, this is so new, this is so disruptive. And Amit, I think, was so phenomenal. What I'm wearing today is this beautiful corset made out of repurposed Banarasi saris. I am a huge champion of sustainable fashion. I love thrifting, I love vintage, and what I love about what you are trying to do is that you're trying to revive textile and you're trying to put it into everyday clothes. And I loved what you did with the collection. I feel like what I'm wearing today is an extension of me. It's powerful, it's sexy, it's feminine, and makes you feel like I can take over the world. And thank you so much. LFW, congratulations. It's going to be a big year, 25 years. And I remember as a child, I'd be so enamored by all your fashion events. And I feel really cool that, I've gotten multiple chances to be a part of it. So congratulations. And thank you so much for making me a part of your show today. It was so special. Everything just came together absolutely well. We are very glad, to have both of you here, today, and we'll open it up for a few questions as well. भूमि जी, सबसे पहले आप अपने आउटफिट के बारे में बताइए, कैसा है आउटफिट, और लैक्मे फैशन वीक को इतना खास क्या बताता है? आई थिंक 25 साल हो गए हैं लैक्मे फैशन वीक के. इट्स ट्रूली अ माइलस्टोन ईयर फॉर देम, एंड आई एम रियली थ्रिल्ड कि उनके 25वें साल में मैंने अमित के साथ कोलैबोरेट किया. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज वर्क. ही जेन्युइनली इज़ वेरी डिसरप्टिव इन हिज थिंकिंग. और मुझे आज जो मैंने पहना है, एक ब्यूटिफुल कॉर्सेट विद आई लव द स्टाइलिंग एज वेल. आई हैव टू टेल यू दिस. आई लव हाउ यू गाइज हैव पुट इट टुगेदर. दिस कॉर्सेट ये रीपर्पस बनारसी साड़ी का बना हुआ कॉर्सेट है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है. आई थिंक व्हाटएवर वर्क अमित ने अपनी बनारसी साड़ियों के साथ किया है, it's always been a standout. Every piece has been spoken about so much, and I'm very confident this one would be spoken about as well. And I think the world is going towards sustainable fashion, and he really epitomizes it. Thank you. भूमि जी, फ़ोन के उसमें और आपके उसमें क्या सिमिलरिटी दिखती है? हाँ, फ़ोन नथिंग का फ़ोन के उसमें ये डिज़ाइन की गई है, तो आपको क्या सिमिलरिटी दिखती है? I think नथिंग के फ़ोन में. आई थिंक वो भी एक बहुत ही डिस्ट्रप्टिव डिज़ाइन है, मैं भी एक डिस्ट्रप्टिव इंसान हूँ. आई थिंक दैट वुड बी द सिमिलैरिटी. I think can I answer for you? प्लीज़. I think एक फ़ोन का काम ये होता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू दो इंसानों को जोड़े. I think Bhumi does that beautifully. I think through her skill, which is I think a technical skill mixed with emotion, she brings I think the human race together. And I think that is the similarity I find between the phone and her.
The color palette was, of course, a lot of neutrals in the collection because I think as a classic wardrobe, you definitely cannot let go of neutrals from your wardrobe. But with, of course, definitely more festive colors that quintessentially work for the Indian skin tone. I think the aspect of the Banarsi, which comes in heritage colors, mixed with a lot of industrial material, was the palette of the collection. भूमि जी, जब आप इंडस्ट्री में आए थे तो अगर आपके फैशन की बात करें या फिर फिटनेस की बात करें, जो आपका कैरेक्टर था काफ़ी अलग था और अब जो देख रहे काफ़ी अलग ट्रांजिशन हुआ है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहिए? कितना ज़रूरी होता है लाइफ में एक ट्रांजिशन लेना, क्योंकि काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनका काफ़ी अलग ही चेंजेस आ रहे हैं। मैम एक्चुअली मैं ना किरदार टू किरदार चेंज होती हूँ। हो सकता है अगले 6 महीनों में कोई ऐसा कैरेक्टर आए जिसलिए मैं ऐसी ना दिखूँ, तो आप इससे यूज टू मत होना। आई एम एन एक्टर फर्स्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ अबाउट व्हाट आई डू एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपने आप को सिर्फ इंटरनली नहीं एक्सटर्नली भी कैरेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्म करूँ। सो आई हैव बीन लाइक दिस बिकॉज देयर वर 2 pieces ऑफ कंटेंट दैट आई वाज डूइंग जहाँ पे वो किरदार ऐसा लगता था, तो इसलिए भूमि अभी ऐसी लग रही है, चेंज हो सकती है वो। मेरे हस्बैंड की जूली तो हमने देख लिया, आगे क्या आगे धमाका? आगे रॉयल्स आ रहा है। आई डोंट थिंक डेट आउट है तो मैं नहीं बोल सकती। हिंट दे दीजिए। नहीं, वो जल्दी आ रहा है लेकिन। थैंक यू। मैम ईद आ रही है, ईद की कोई विशेष दे दीजिए। जी सबको बहुत 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 भाईजान ज़्यादा की ईद मूवी भी आ रही है, मुबारक। सिकंदर। जी हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। थैंक यू।